नमस्कार दोस्तों, ये बात तो आप सबको मालूम है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इसी वजह से कैलाश पर्वत एक अनोखा स्थान है। वैसे तो दुनिया में सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है और अभी तक 7000 से भी अधिक लोगों ने उस पर चढ़ाई की है। वहीं दूसरी तरफ तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर है, फिर भी आज तक कोई भी इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि इस पर्वत पर किसी ने चढ़ने की कोशिश नहीं की। सच तो ये है कि बहुत सारे पर्वतारोहों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की है, पर वे सब नाकामयाब रहे। Hugh Rutledge, a mountaineer of UK, studied the north face of the mountain and said it's utterly unclimbable. Herbert Tichy, an Australian climber, when asked some of the local leaders in Tibet, they said only a man entirely free of sin could climb Kailash, and he wouldn't have to actually scale the sheer walls of ice to do it. He would just turn himself into a bird and fly to the summit. According to ancient Tibetan legends and writings, no mortal ever be allowed to walk atop Mount Kailash, where among the clouds is the abode of the gods. He who dares to start the top of Mount Holy and see the faces of God will be put to death. Colonel Wilson, one of the many mountaineers who tried to climb the summit of Mount Kailash, explained, "Just when I discovered an easy walk to the summit of the mountain, heavy snow started to fall, making it impossible to climb." In 2001, Chinese government gave permission to a Spanish team to climb the peak, but in the face of international disapproval, the Chinese decided to ban all attempts to climb the mountain. According to some strange theory, the mountain keeps changing its position for those who want to climb it. That is the reason why many people's journeys have failed to climb its peak. कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वतों में से एक माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10 स्पिरिचुअल फैक्ट्स ऑफ माउंट कैलाश। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। रशियन साइंटिस्ट्स क्लेम that Mount Kailash is too perfect and symmetrical. Its extremely perpendicular sides give it the appearance of a pyramid. Mount Kailash is actually a massive man-made pyramid that was built in ancient times. It is claimed that it was surrounded by many smaller pyramids and could be the center of all the paranormal activities. This mountain is not like other mountains which are roughly shaped like a cone. This one has 4 distinct faces, almost aligned with the 4 directions. The Purans also say that each face is made of gold, ruby, crystal and lapis lazuli. Lapis lazuli को हिंदी में लाजवर्द कहते हैं, जो एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है। Some researchers also claim that Pyramid of Kailash is hollow from inside. Jains refer to Mount Kailash as Mount Ashtapad and believe that the religious founder Rishabdev attained nirvana, that is, the ultimate happiness there. Mount Kailash is known as Mount Meru in Buddhist texts. It is central to its cosmology and a major pilgrimage site for Buddhist traditions. कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी कुछ 900 साल पहले। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। There are 2 lakes at the base of this mountain, the Mansarovar and the Rakshasthal. These 2 lakes are like yin-yang. Let me tell you how. Rakshasthal is believed to be the lake of Ravana, or the demon, where he performed his tapasya to please Lord Shiva. The shape of Mansarovar is that of a sun, and Rakshasthal has a shape of a crescent moon. Mansarovar is one of the highest freshwater lakes in the world, while the Rakshasthal is one of the highest saltwater lakes. Mansarovar is always calm and serene, irrespective of the weather conditions. Rakshasthal, however, is always stormy and has rough waters. इसका रहस्य आज तक पता नहीं चला कि आखिर दोनों तालाब इतने पास ही है, फिर भी दोनों के पानी में इतना फर्क क्यों? Another uniqueness contributing to the mystical and spiritual aspects of Kailash is that 4 most sacred rivers of the Indian subcontinent begin from here.
Satluj, Karnili, Brahmaputra, and Indus. The end of these rivers is more than 2000 kilometers apart, yet they all have their source within 100 kilometers of Mount Kailash. Russian and American scientists believe that Mount Kailash is the center of the world and is known as the Axis Mundi. Axis Mundi is the connection between physical and the spiritual world. Its location is in synchronization with several ancient monuments in the world and the Earth's poles. The North Pole is exactly 6,666 kilometers from here. माना जाता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। यह चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु भी है। Those who have visited Mount Kailash have experienced that time travels very fast here, that their hair and nails have grown within 12 hours on the Kailash, which takes 15 days to age in the normal circumstances. This unusual phenomenon has never been witnessed anywhere else around the globe. According to Hinduism, Buddhism, and Jainism, Mount Kailash could be the gateway to heaven. And Vedas also describe the same, that Mount Kailash is a link between earth to heaven. Near Mount Kailash there is Om Parvat. The snow falls on the peak and takes the shape of Om. And when the sun sets, the holy mountain casts a shadow. The shadow forms the shape of a religious symbol, swastik, which is considered as an auspicious sign amongst the Hindus. Gauri Kund, that is also known as Lake of Compassion. This lake is famous as Parvati Sarovar, where goddess Parvati had procured her child Ganesha. It is believed that goddess Parvati had framed her child Lord Ganesha from the cleanser foam of her body and breathed life into it. कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद है। हम देखते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ विज्ञान और तर्क से समझा नहीं जा सकता। कुछ घटनाएं मानवीय तर्क से बहुत ही परे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप द इंडियन साइट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।